Bismillah Rahman Rahim. A very good morning, good afternoon, and good evening for everyone who is watching this session today. Today's webinar is on a very interesting and hot topic of online learning and skill development in Pakistan primarily. Being that said, the technology has always been a major driver of change in the education sector. From the introduction of the printing press to the rise of the online technology learning platforms today, has always been a profound impact on how we learn today and how we unlearn and relearn. And as we move into the future, it's clear that the new trends in education technology, including the online platforms we have today and the emerging technologies, including AI, virtual reality, augmented reality, wearing technologies, and so forth, has continued to play their role to shape up the education landscape in whatever way possible. Today, we have a very strong panel of eminent speakers, starting from Mr. Mudassir. I would like to request Mr. Mudassir to kindly introduce yourself. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर है और मैं करंटली COO AnaConX सॉल्यूशंस हूँ। लर्निंग और डेवलपमेंट एक्चुअली मेरा पर्सनल पैशन है और मैं इसके लिए अपना थैंक यू करता हूँ अपने टीचर्स को, जिन्होंने इस तरह पढ़ाया और इस तरह उन्होंने ये चीज़ बिल्ड की हमारे अंदर कि आज ये एक शौक है कि हम वापस जाके अपना जो एक्सपीरियंस है वो लोगों में, बच्चों को बता सकें। और सिंस 2005 में आईटी कंसल्टेंसी भी और एक ये पार्ट टाइम पैशन जिसमें यूनिवर्सिटी में भी ट्रेनिंग की है, तो इस एरिया में काफ़ी एक्सपीरियंस है मिडिल ईस्ट में और अब पाकिस्तान में जो है कोशिश करते रहते हैं कि एक लर्निंग और डेवलपमेंट की जो इन्वायरमेंट है वो ग्रो हो सके। Thank you very much, Mudassir sir. Very warm welcome on the panel. Our next speaker and guest today is Adnan sir. If I kindly request to introduce yourself, please. Assalamu alaikum. I'm Adnan. I'm working as head of IT and CxO at Ornua. I'm based in Ireland, Dublin, Ireland. So the company I work for is a dairy co-op. We export Irish dairy products to over 100 countries and largest exporter of dairy products from Ireland. I would try to add my 2 cents on how learning and development is playing a key factor in bringing talent to the IT environment in general, different communities. From my case, I'm part of the manufacturing sector, so I can provide some inputs around if dealing within manufacturing sector, how learning development could be a main pillar to bringing your talent. Thanks. Thank you, Adnan sir. Very warm welcome on the panel. Our last and third and last guest and speaker is Mr. Arif Shaikh. If I kindly request him to introduce himself, please. You're on mute, sir. Hi. Currently, I'm working at Progatix as a CIO and CTO, and I've been in the industry for the last 27 years now. I've been a trainer for Cisco for the last 20 years, and I've seen the whole roadmap of 20 years of education, from generic education to online education now. So online, yes, definitely the future is online, and we are all focused on that. So hopefully, let's see what will come up with this discussion. Thank you very much, and very warm welcome to all of you on the panel. And I definitely very hopeful to engage the audience today in this very interesting discussion. And we're going to learn a lot about the new trends within this
educational landscape or educational space as well from our eminent speakers. So without any further ado, I would like to pose my first question to Mudassir Saab, sir, if you could kindly shed some light on the education landscape of the geography you're working in these days. सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि वी आर नेशन ऑफ ऑलमोस्ट 220 मिलियन पीपल, ठीक है, and almost 65% of them is about 35 years old. And the challenge is, even if we go beyond, so we are talking about 80 to 90, 70 to 80% of the population, जिसके लिए ये हमें एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम है वो इन प्लेस करना है. अच्छा, इसको मैं क्यों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ऑनलाइन एजुकेशन है जो आरिफ साहब ने कही और जो कि अदनान साहब भी बात करेंगे, वो ये है कि हम प्रोफेशनल ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं. मैं जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास ऑलमोस्ट 5 to 16 years of age के में 5 to 7 million स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल सिस्टम में भी नहीं है. तो एक्चुअली ऑनलाइन एजुकेशन का जो लैंडस्केप है वो पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी और बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, वो अभी उसका बहुत मायोपिक व्यू है. वो बहुत ही फोकस्ड है प्रोफेशनल एजुकेशन पे, वो बहुत ही फोकस्ड है उस चीज़ पे जहाँ पे उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम पे पड़ रहा है. वो इस्तेमाल नहीं हो रहा इस चीज़ पे कि वो आपकी पूरी नेशन को ग्रो करे एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रॉम स्कूलिंग टू यूनिवर्सिटीज टू द प्रोफेशनल लाइफ. तो दिस इज द करंट वन. हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रोफेशनल में हमारे पास ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि ऑब्वियसली आरिफ साहब जैसे 25 ईयर्स हैं. मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ, इसके अलावा ऑरेकल प्रोवाइड कर रहा हूँ. तो ये हम वो लोग हैं जो कि हमने इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस है, हमने इंडस्ट्री में सीखा है और हमने इंडस्ट्री में हम ग्रो कर रहे हैं. लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की जब बात होती है तो मैं समझता हूँ कि कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन और स्कूलिंग एजुकेशन एक अनदर इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको हमें ज़रूर टेकअप करना चाहिए. Right. I mean, so considering the same aspects, like the expanding education landscape while adopting online platforms and so forth. Arif Sab, would you like to add your views on this, please? Yes, education हमारी online ज़रूर है, मगर वो इस तरह की कामयाब नहीं है. I've been into different projects with the Sindh government and Cisco especially, क्योंकि मैं Cisco का पाकिस्तान में एम्बेसडर भी हूँ Cisco ट्रेनिंग के हवाले से. We have seen a lot of things ना. Cisco is offering free education globally. लोग उसको पिक नहीं करते, लोग उसको पढ़ते नहीं है. हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन के समय दो मोड है. एक तो ये कि विच इज फ्रीली अवेलेबल थ्रू आउट द इंटरनेट. सेकंड वो है जो इंस्ट्रक्टर लेड होती है कि आप इंस्ट्रक्टर के जरिए उसको पढ़ रहे होते हैं. तो अभी ये डिस्कशन में ये दो चीजें हैं जिसको हमने डिस्कस करना है कि नंबर एक, हम कौन सी वाले की बात कर रहे हैं, वो जिसमें इंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व होता है एंड दे चार्ज, और वो जो टोटली फ्री है. कॉस्ट जिस फ्री की हम बात कर रहे होते हैं उसका आज तक कोई आउटपुट हमें नहीं मिला. यूएन का एक वो है 17 पॉइंट्स हैं सस्टेनेबिलिटी के, उसमें एक पॉइंट ये है कि हर दुनिया के हर मुल्क का हर फर्द जो है उसको कम से कम इतनी टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस हो कि वो डिफरेंट चीज़ों को समझता हो कि व्हाट इज एक्चुअली मोबाइल, हाउ डज इट वर्क फ्रॉम द बेसिक्स, इंटरनेट क्या होता है, किस तरह उसको यूजेज किया जाता है. इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने काम किया हुआ है, बट वी एज अ नेशन हमारे पास वो चीज़ डेवलप नहीं हो पा रही कि हम उस चीज़ को प्रॉपर अडॉप्ट कर सकें या उसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर सकें या उसको प्रॉपर सीख सकें. तो एक बहुत बड़ा लैक है इसके अंदर हमारे पास, उसको थोड़ी सीरियसनेस के साथ देखना पड़ेगा. Right, I mean, just connecting the dots, what Mudassir Sahab has said and your good self is, I think in Pakistan in particular, we are facing various challenges in terms of adopting or transforming the way we learn through the online platforms and the technology solutions in the edutech sector that we have. Adnan Sahab, would you like to share your experience from the foreign markets from outside Pakistan? I think if we need to attract the talent and give them multiple ways to grow,
their knowledge, it shouldn't be confined to going to college and getting things done. For example, here in Irish government, they are putting a lot of emphasis on apprenticeship program in IT. What they are trying to do is a 2-year program they're offering for those who are dropout from college or who didn't get to college, people from unprivileged areas, and also those who didn't get enough marks to do their bachelor's. And what they have done in this 2-year program is for 6 months, they do an online learning, and there are different options available: cybersecurity, networking. There are different IT courses. And then after 6 months, they are then linked to one of the employer in the country, and it's co-funded. Employer is paying half of the payment, and then government is funding as well. The main benefit for this whole program is the person who is part into this journey, first 6 months complete the online education, then come back to the industry and work 3 days a week in the industry and 2 days doing an online learning. Doesn't have to go to the college. And along the way for 2 years program, every 6 months there is an online exam as well. So they're completing, I think, CompTIA exam as well, security, if they are in security. We have hired 2 in apprenticeship as well in our program as well, successful program. And I'm seeing other companies are doing the same thing, and they are available in different modes of life. They're not only with IT. So one aspect of it, we need to promote apprenticeship program. Not everyone can become a doctor, engineer. So you need to think about, you need to bring talent from various ways. Same as in IT, you don't want everyone to be head of IT. You want DBA, you want network administrator, architect. So you can't have everyone doing the same thing. So if you are looking for different avenues, online learning, I think Arif have picked up that one as well. I'll give you another example. I keep repeating to whoever I meet in Pakistan is ISC2, one of the best certification they offer is CISSP. They are offering a free certified in cybersecurity exam. So they are giving 6 months online learning. They're also giving an exam. You have to go to Progatix Center and complete it. It's all free. So whoever I talk to, I keep saying, why don't you go ahead and do it, even if you're in college, and get this done. There are a lot of available. This is just one example I've given, like Arif has mentioned on Cisco, you name it. Google is doing it, their whole AI thing. Microsoft is now offering their certification program in AI. I think one thing I'm thinking is lacking is awareness. The good thing here in Western world is happening in the college and school is mentoring. So even in our industry, I may be mentoring 1 or 2 people who are new joiners. So how do we make sure there is a concept of people going to somewhere and then they can get this knowledge? So if I'm not talking to people, how on earth they know that there is something available? So we can find some time within this whole Pakistani industry. Everything is within Pakistan, but most of the learning options, opportunities available are coming from outside. They are free, as Arif mentioned, but do they know about it? We need to work with our universities and colleges, let them know that if they just complete their bachelor and come out of their college and trying to think that they know everything, we are missing the point. The another thing I would think about is the internship program as well. See how we are promoting internship, going back to the industry, and also looking for online learning. So I think our topic is online learning is skill development. So if you just focus on online learning and not focusing on skill development, they are mutually exclusive. To make sure you get the best of the both world. They are getting opportunity, internship opportunity, apprenticeship opportunity, and also there are opportunities available to learn through online way as well. There are certification even free of cost available. But do we think that our grassroots level people are aware of this? And then that's one of the things which is lacking. I think we need to address from my perspective. And exactly, and in fact, when it's a very rightly said and highlighted challenge that when there is a lack of awareness as far as online platforms are concerned around, particularly when we see the in the Pakistani market. But being that said, as you highlighted, in the global space, there are a lot of big players, the top-notch companies. They are offering all their learning through the online platforms, which is it's all depends of how much people are aware about them and how convenient it is for them to adopt.
So just to take the discussion forward, Mudassir Saab, what do you think, like in your opinion, that what would be the potential challenges for the students in colleges and as well as the professionals to adopt the online learning platforms? देखिए एक चीज तो बिल्कुल आया है कि that we are living in a world where at this point in the last 5 years and in the coming world in the coming time that education is absolutely free. So if anybody is complaining that education is not available and they don't have an access and they cannot learn and there are no people are not available for mentorship and people are not available for guidance, I mean that is not true. I mean, when we were growing up in 1990s and 2000s, it was a difficult task. I mean, but today, YouTube availability, all the websites, all the big companies, they are all offering free courses. चैलेंज है कि लोगों को और स्टूडेंट्स को ये बराबर कराना, उनको ये बताना कि आप ये जब करेंगे इट इज गोइंग टू ऐड वैल्यू. आरिफ साहब ने एक्चुअली बहुत अच्छी बात कही थी कि लोग ये समझते हैं कि अगर कोर्स फ्री है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है. वो आपका जो है वो फर्स्ट बिल्डिंग स्टेप है. और इस वक्त ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि बाकायदा सर्टिफिकेट कोर्सेज की तरफ आपको लेके जाते हैं. एक चीज़ जो शायद पाकिस्तानी यूथ के माइंडसेट में है या हमारी कल्चर में है, वो ये है कि अच्छा आपने एक कोर्स कर लिया है जो कि 4, 5, 6, 8 घंटे का है एंड नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग और दे आर अज्यूमिंग कि इस कोर्स के बाद दे आर गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ इट, और वो जो है उनको एक एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, विच इज़ नॉट द केस. ये जितने भी कोर्सेज हैं एंड आई स्टिल डूइंग इट माई सेल्फ, अभी PMI के जनरेटिव AI पे कोर्सेज हैं, जो यूडेमी पर हैं और जो कोर्सेरा पे हैं. They are to actually introduce you to the technology and then you need to go ahead, learn yourself, practice. जनरली हमारे यहाँ अभी ये माइंडसेट नहीं डेवलप हुआ. हम हर चीज को लिंक करते हैं कि फौरी तौर पे जॉब मिल जाए एंड देन फौरी तौर पे जो है उससे जो उसकी ROIs शुरू हो जाए, जबकि एक साइकिल है जिसको बात हुई अदनान साहब ने भी कही, आप साहब ने कि हमें कॉलेजेस से लेके चलना होगा, वहां पे उन्हें बताना होगा कि अच्छा ये एक्स्ट्रा कोर्सेज है. And I know that right now most of the universities in Pakistan, they have direct contracts with Coursera and they have direct contracts with EDX, जिससे जहाँ से लोग स्टूडेंट्स को वो कोर्सेज करा रहे हैं और उनको वो कोर्सेज फ्री हैं. मगर आई स्टिल डोंट सी कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने वर्कलोड में से या उस चीज़ को इम्पोर्टेंस रियलाइजेशन करते हुए वो कोर्सेज जो उनको यूनिवर्सिटी लाइफ में फ्री हैं वो उनको अवेल कर रहे हैं. तो ये फुल होल माइंडसेट का चैलेंज है. पाकिस्तान इस वक्त जो डिजिटल या ऑनलाइन फोकस है वो SEOs पर है या कंटेंट राइटिंग्स पर है या इस तरह की चीज़ों पर है जो कि क्विक विंस हैं, विच इज़ अगेन अ नीड. क्योंकि बहरहाल अगर आपके पास 100 इस तरह के, एक छोटी इंडस्ट्री है जिसको आपने अगर खड़ा करना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो वो 4-5 साल लेती है उसे खड़ा करने में. तो अगर आपके 100 बच्चे ऐसे लगे हुए हैं या 100 जो वर्क फोर्स है इस तरह के इसमें लगी हुई, तो बेसिकली एक होम ग्रोन छोटी इंडस्ट्री है. लेकिन हमें इसको ग्रो करना होगा, हमें टेक्नोलॉजी की तरफ आना होगा जो एक्चुअल टेक है, क्योंकि जो टेक है दैट वुड ग्रो. इस वक्त हम शायद सेकंड नंबर पे कंट्री हैं जिसकी जो है आउटसोर्सिंग चल रही है, लोगों की फ्रीलांसिंग और वो सब चल रहे हैं. हम नंबर ऑफ पीपल हैं आफ्टर इंडिया शायद. तो इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, मगर अभी इसका जो फोकस है वो बहुत कम है. वो SEOs है, मार्केटिंग्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, और हमें इसको बस टेक की तरफ लेके जाना है. और आई थिंक जो इस वक्त कुछ कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके इस चीज़ पे भी कोशिश की है कि एजुकेशन को भी मार्केट से जो है वो लिंक किया जाए, जो मार्केट में नीड है. और ऑनलाइन की तो मैं जैसे आपको कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हर वक्त हर बंदा अवेलेबल नहीं है and then you just cannot actually get everything out from one resource or one platform or from one job.
तो ये जितनी भी ऑनलाइन एजुकेशन है और जितने भी ऑनलाइन ट्रेनर्स हैं वो आपको बहुत बड़ा फीडबैक देते हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपको बताते हैं। तो ये हमें माइंडसेट कल्टीवेट करना है कि फ्री कोर्सेज हैं या जो बड़ी कंपनीज कोर्सेज करा रही हैं उनको अडॉप्ट किया जाए, उन अपॉर्चुनिटीज को जो है सीख किया जाए और उनसे जो है फायदा उठाया जाए। नहीं, आपने वजह फरमाया, वो उसमें बुनियादी तौर पर वो जो माइंड सेट की जो, जैसे आपने जिस तरफ इशारा किया, उसमें हमारी एक आई थिंक द कलेक्टिव चैलेंज इज दैट द हर्ड साइकोलॉजी। वो भेड़ चाल वाला जो मामला है कि वो कुछ देयर आर फ्यू पीपल हु एक्चुअली स्टार्ट टर्निंग द एफर्ट इनटू द डॉलर वैल्यू, सो द एवरीवन स्टार्ट फॉलोइंग दैट considering the short term the benefits. Regarding that said, I think there's a lot to be done, as you rightly said. Mindset shift is one thing which of course has to be part of that effort, jahan par hame we need to educate people in the long term benefits kya hai technology adoption ke, considering the online platforms for the learning. Adnan sir, what do you think जो challenges in terms of adopting now, जिस तरफ मुदस्सिर साहब ने इशारा किया कि एक तो mindset shift के challenge है, there's a resistance in terms of changing themselves from a traditional typical practices which they have been still being followed. एक तो वो रहेगा, और दूसरा वो जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की तरफ थोड़ी सी हमेशा तरजीहात यही होती हैं कि कोई इस्लाही बुनियादों पर नहीं, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट कुछ निकलना चाहिए। तो उसके अलावा जो being the technologist yourself, what do you think that what would be the practical challenges in order to adopt such online platforms for learning for the organizations? One of the thing is very important working in the Western world is the integration and close relationship between an industry and with academia. So here academia don't even announce a course without consulting with the industry. Even industry is dictating them what type of courses they need to announce. So one of the common thing here happening, even like we have the intermediate exam here, you call it A levels exam. So if you are getting top marks here, you're looking for courses that we never heard in Pakistan. So I'll give you an example. You will be doing bachelor's in finance and IT. So after bachelor's, you decide whether you want to become a chartered accountant or you want to become an IT person, a finance and law. And these are very high marks ones. So the top university here in Ireland is Trinity College. If you need to get admission, you're talking about top 5% people who are getting it. How they are coming back with these kind of, so it was strange to me when I heard that the type of courses are being offered are quite unique, but they are listening to the industry. What is the demand? Even some of the courses are being sponsored by the industry. So the main benefit is when you finish your graduation, there is already a job available for you. It's not like I'm studying in something that is no one cares about it, and I just got that admission because that's based on my exam result that I can only get it. So, and how academia can work together with industry is to make sure what's the need of the industry. At the end of the day, these students have to go back to the industry. Not everyone will be going back to academia and doing like study and teaching students, which is maybe 5% of the majority of students. So how do we make sure? We need to make sure that demand and supply are both linked together. What industry is asking for is what you're producing. And the second thing is that when we are looking for hiring candidates, it's not only about what you learn in the college. It's the online education, skills development. Do you know anything more than your bachelor's degree? Have you done those certifications? Have you done those courses? It depends on whichever industry. I'm not really focusing on IT industry. So that's what we have seen, that make sure they are working jointly. There is a joint effort. Same as in our industry, are we providing fresh graduates opportunities? So one example I'll give you, it's very common here in Ireland to for someone who completes his graduate to join a graduate program. It's very common across different industries. And what happens in the graduate program? You name it, any big four accountancy firm, you name any big global IT company, their EMEA headquarters is in Dublin.
So it's like we call it Silicon Valley of Europe, Dublin. And what we have seen in the graduate program, there is a 2 years program. The students are coming just fresh from the college. On the job, they are learning. They are assigned to online learning as well. They are assigned to different institutes. For us, we use it IMEI, Irish Management Institute. So they go there. There is a different kind of skills. So it's not only about how good you are technically. It could be skills around speaking power, is skills around communication. One of the things when I came from Pakistan 16, 17 years ago, I lacked was communication skills. I know what I need to talk, but the problem was I didn't have enough confidence to say the same thing in front of the senior people. And I found out this is common across the board. Whoever is coming from Pakistan and India, the biggest challenge we see is communication. Can you explain to me what you know? So we have to, we shouldn't be only relying on the basic core education, English, maths, and physics. We need to think about what else we could offer to a candidate. Like from industry perspective, we look for the full package, not like you are the topper in your university. You may not be one of the best student for us in the industry, because I'm looking for other aspect of it. How good you are in working with the team. Do you have too much ego? Can you work with the team of diverse talent? Are you willing to share your knowledge? Are you willing to gain knowledge? Are you prepared to help others? So it's the diversity is what we normally look for in the industry. So if I summarize, one is academia versus industry. Do we have that level of integration going on? Because I'm sitting from outside, so I can't really comment on it. If it is not, there is a room for that. There is a room to bring people from industry in the academia and do different types of sessions. Like, for example, I'm always available when I go back. I'm from Karachi, and I'm happy to do those sessions and let them know what's going on outside your own world. Give people opportunity to understand how to become a complete person in your education, rather than just trying to do, like we have this ratta culture, so trying to do everything, and then, oh, I'm getting 100 marks means that I'm done with that one. There is no room for a ratta culture in the Western world. Even the exams, the way they are being conducted, we are talking about research. Even here in primary school, students, they are preparing presentations on PowerPoint, and they are giving a topic, and now you need to go and research yourself. So we are very much different than, trying to, here is a 5 paragraphs, you read it, you get 100 marks. So how do we make sure that people are given opportunity? Online learning is one aspect of it, but I think that there are other ways you need to get people learn things. We shouldn't be only thinking about, oh, this is the only way. The one small thing, I think Mudassir has also picked up this. There is a concept that if you're doing an online education, it's not worth the same as if you're going to the college. That's not the case. Like Harvard and all those big universities, they're now offering those online learning courses. Like if I have to go, how can I get 1 month off from my employer and go to Harvard and do this? It's just not possible. So if you look for people who are doing those certification courses, 99% chances they're doing an online course, even for advanced learning courses. And yes, I don't think so. Online learning is a replacement of going to the college. I don't think so. It's a mix. Some people can't do it. Give them an opportunity. Same as online learning or college may not be for everyone. I'm talking about apprenticeship program. I'm talking about internship program. So you have to give different opportunities to different types of people, because not everyone is going to become the president of Pakistan. So you need to have a culture that you need people at different level, stage of life. Right, exactly. When you touched upon, I believe, the several points which I wanted to have your views on that. I mean, just to break down into some of the key points which you mentioned, is that the skill development is not easy, and it is still challengeable, not to be compensated only with academia, just a rata culture, and they just a person coming out from that kind of environment still need to have those skills which
are required to be a well performer in the global market. The second thing is as both of you, Mudassir Sahab and Adnan Sahab, have highlighted that the online platform is not a substitute of a traditional way of education in the university campus. The on-campus programs, definitely it complements and it enhances the performance and the grab. And the third thing, Arif Sahab, if you kindly shed some light on which Adnan Sahab mentioned, that there's a lot of such culture where the content, even the skill which we are producing at the moment, there's a huge gap between academia and the market demand. Do you think that when regulators have to play a good role in that in order to allow or bridge up that gap? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें ना, और डेफिनेटली आप सब लोग जो बात कह रहे हैं सारी चीजें अपनी जगह वैलिड है, एंड एग्जैक्टली यही सारे प्रॉब्लम सब फेस कर रहे हैं. द फर्स्ट थिंग, जो आपने एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच की जो गैप बात करी, हम ये आज से बात नहीं कर रहे. मुझे कोई 20-25 साल हो गए हैं इस चीज में देखते हुए, बात करते हुए. वी आर स्टिल स्टैंडिंग देयर. प्रॉब्लम इंडस्ट्री का नहीं होता. इंडस्ट्री तो विलिंग है, बंदा उसको ट्रेन अगर मिल जाएगा वी विल हायर. प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज एंड के ऊपर उस लेवल पे बंदा हम बना नहीं रहे, लड़के लड़कियों को हम उस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे. वो क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज द इंस्ट्रक्टर वर देयर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी जो मेंटालिटी है या द लेवल ऑफ एजुकेशन दे हैव, दैट्स बीन ऑब्सोल्यूटेड. वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज वगैरह के, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे कहते हैं सर हमारे को ये कहा जाता है कि ये जो सर्टिफिकेशंस है इसकी वर्थ नहीं है. जो आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, इसकी वैल्यू है, इस पे फोकस करें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. एंड व्हाट दे आर, हम सबको पता है यूनिवर्सिटीज के अंदर जो लेवल ऑफ एजुकेशन है एंड जो कंटेंट दे आर टीचिंग इज वर्थलेस इन मार्केट. उसकी कोई अहमियत नहीं बची हुई. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो कहीं पर भी नहीं है. सेकंड, एक और हमारा बड़ा एक अलमिया है, वी आर ऑफरिंग एवरीथिंग फ्री. लास्ट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था, एआई का फ्री प्रोग्राम चलाया था थ्रू आउट पाकिस्तान. क्या हुआ कुछ नहीं पता. करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो गया, कुछ नहीं पता चला. 500-500 बच्चा, 700-700 बच्चा एट अ टाइम जो है वो एआई की ट्रेनिंग ले रहा है. उसका कैलिबर क्या है, उसका मूड क्या है, इट्स फ्री एंड एवरीवन इज देयर. सेम विद अदर इंस्टीट्यूशंस एंड अदर सर्टिफिकेशंस, वी आर ऑफरिंग फ्री फॉर नथिंग. अभी गवर्नमेंट सिंध ने जो है ना एक आईटी का प्रोग्राम स्टार्ट करा हुआ, विच इज ऑल्सो फ्री. क्या रिजल्ट आ रहा है? नथिंग. माँ बाप का गम ये होता है कि वो बेचारे कहते हैं हम बच्चा भेज रहे हैं एंड ही इज स्पेंडिंग टाइम एंड मनी एंड गेटिंग नथिंग. फ्री है ना, बच्चा जा रहा है, घूम फिर के आ जाता है, उसका सेंस नहीं बन पा रहा, वो उसको सीरियस नहीं ले रहा. मेरा ये एक राय है, मेरी एक एडवाइस ये है कि अगर ये ट्रेनिंग्स जो हम स्टूडेंट्स को या बच्चों को फ्री ऑफर करते हैं ये हम ना करें, इसकी निस्बत जो हमारी यूनिवर्सिटीज के और जो इंस्टीट्यूशन के इंस्ट्रक्टर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं उनको पाबंद करें. दैट यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ एंड गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग ऑन यू. वो पैसा जो आप वहां एडवर्टाइजमेंट पर लगा रहे हो अपनी शोहरत के लिए कि इलेक्शन में आपको थोड़े वोट अच्छे मिल जाए, वो पैसा उन इंस्पेक्टर्स पर लगाओ ना यार, ताकि उनकी लाइफ बने और वो बच्चे को वो पढ़ाएं जो अप टू द मार्क है. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि उस तरह का विजन नहीं है हमारे पास. हमारे पास हर चीज अवेलेबल होती है, मगर हमारा बच्चा जो है ना, ही नीड शॉर्टकट्स. आपको एक मजे की चीज बताऊं, अगर आप थोड़ा सा नोट करें, ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी गुड. हमारे पास वीयू जो है उसकी एक बेहतरीन एग्जांपल, वर्चुअल यूनिवर्सिटी. अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से पुरानी यूनिवर्सिटी है, हजारों लाखों बच्चे वहां से पढ़ के ग्रेजुएट हुए हैं, मास्टर्स हुए हैं, बल्कि अल्लामा इकबाल तो पीएचडी भी ऑफर करता है. तो इट्स नॉट बैड, करने वाले कर रहे हैं, मगर हमारा एक माइंड सेट है, हमें वो एक लोकेलिटी चाहिए, एक जगह प्लेस चाहिए जहां पे हम करें. हम घर में बैठ के नहीं कर सकते. ऑनेस्टली मैं इतने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं ऑनलाइन जाकर तंग आ जाता हूँ कि बच्चा जो है ना अपना वो कैमरा बंद करा हुआ है और बैठा हुआ चुपचाप सुन रहा है, और वो उसको समझ में आ रही है नहीं आ रही, नथिंग, कुछ नहीं पता चलता. ये फैक्टर्स हैं हमारे जो बहुत सीरियस लेवल पे हैं. हमने ऑनलाइन एजुकेशन को जो है ना उसके बहुत बेनिफिट्स हैं डेफिनेटली. जैसे अगर कोई लेक्चर अगर दे रहा है उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल ऑनलाइन, आप जाके उसको बार बार रिपीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो.
ہم اس طرح نہیں کرتے. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے, ہمارا جو بچہ ہوتا ہے, ایون وی ہیو ڈیولپرز اینڈ آئی ٹی اسکلس پرسن, وہ ڈھونڈتے ہیں میرا سولوشن کیا ہے, میرا پرابلم کیا ہے, اس کا سولوشن مل جائے مجھے بس. اب تو خیر ماشاء اللہ سے چیٹ جی پی ٹی آ گیا تو اور زندگی آسان ہو گئی ہے. ادروائز وہ یوٹیوب پہ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے آگے پیچھے, بھائی کہاں پہ کون سا پرابلم چل رہا ہے. تو سی ایکچوئل ہمارا جو اوور آل تھرو آؤٹ دا نیشن ایک پرابلم ہے, وی آر ناٹ فوکسڈ کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہمارے پاس صرف دو ہی مقصد ہیں, سستی شہرت مل جائے, آئدر وے ٹک ٹاک پہ ملے یا فری ایجوکیشن کے ذریعے ملے. کراچی میں ایک بہت بڑا سیٹ اپ چل رہا ہے فری ایجوکیشن کا. اگین لوگوں کا اچھا خاصا پیسہ ہے, اربوں روپیہ ماشاء اللہ وہ فنڈ جمع کرتے ہیں, تو لاکھوں تو لگا ہی رہوں گے اس کے اوپر. بلڈنگ ہے ان کے پاس, سارے سیٹ اپ ہے, انسٹرکٹرز ہیں. میں نے بھی وہاں پہ پڑھایا 6 مہینے, تو مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آیا. میں نے اس لیے چھوڑ دیا, کوئٹ کر رہا ہوں سر. میں نے کہا فری کا فائدہ کیا ہو رہا ہے, بچہ سیریس ہی نہیں ہوتا. Right. So, Arif sir, just میں جیسے پوائنٹ یہاں پہ ہائی لائٹ میں اگر کر دوں before coming to him, this is someone kindly کہ عارف صاحب very rightly highlighted, کہ جو پروفیسرز ہیں یا جو actually the trainers ہیں in our education institutions, they need to seriously upgrade themselves. And of course that's exactly where from my question was coming. Regulators have to play an important role, such as Ministry of Education or Higher Education have to put up that criteria in order to uplift the skill set of the trainers itself, so that they can deliver the trainers courses. That will make adoption easy. That will bridge up that gap of academia and the industry, I believe. And of course the engagement of, جس طرح عدنان صاحب نے rightly highlight کیا تھا, کہ internship programs does a lot, and especially the capstones جو ہوتے ہیں آپ کے masters کے and bachelors کے, even جو thesis وغیرہ, تو اس میں industry I think can play a very important role in guiding. تو مدثر صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ میں ایکچولی عارف صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہ رہا تھا. دیکھیں, as a nation there are a lot of challenges. Our 75 years is full of challenges and full of debacles and full of all sort of things. But we have grown. It is not that we have not grown. Okay, آج اگر ہم second largest freelancers ہیں, اگر آج ہماری جو IT industry ہے, it is going in 400 million and 2 billion in a year. So there is something which is going on, which is right. Okay, yes, I take it کہ ہم بہت focus نہیں ہیں, بہت haphazard ہے. انہوں نے نام نہیں لیا. Yes, they are running 20,000 people. It means problem challenge یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک گائیڈ لائنس نہیں ہے. It's not trickling down from top to bottom. So everyone is trying to make sure کہ اس وقت جو IT کا بوم ہے وہ کسی طرح اس یوتھ کو دے دیا جائے, تاکہ وہ جو بھی ایزی منی ہے, جو بھی گھر پہ بیٹھے, کیونکہ ہم جاب تو جنریٹ نہیں کر پا رہے, ہم انڈسٹری تو نہیں لگا پا رہے, ہم سائنس اینڈ ٹیک میں تو اس طرف اتنا فوکس نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہے, تو ایک ہر کسی جو بھی ادارے ہیں, جو بھی انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کا ایک فوکس ہے کہ جو بھی ہے اپنی طرف سے کوشش کر سکیں. اور میں مائی سیلف از شاک ٹو سی کہ جو چھوٹے ادارے ہیں جن کا گورنمنٹس کے اگینسٹ 0.1% ریونیو ہوگا, 0.01% ریونیو ہوگا, اور شاید 0.001% ہوگا, وہ اتنا امپیکٹ لے آتے ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو فوکس نہیں کر پا رہی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی از اے prime example. یہ شاید پچھلے 30-40 سال سے میں even when I was doing it was there, even I think شاید میرے پیرنٹس کے زمانے سے ہوگی, کیونکہ تو ڈائریکٹ برٹش اونڈ وہ ہے. تو اٹس اے پرائم ایگزامپل کہ ہم تو آن لائن ایجوکیشن میں اس وقت سے شاید دنیا نے سوچا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, ورچوئل یونیورسٹی از این ایگزامپل. آن لائن ایجوکیشن از ناٹ اے سبسٹیٹیوشن, اینڈ آئی کمپلیٹلی ان ایگریمنٹ ود دا ٹیچرز اینڈ دا پروفیسرز آف دا یونیورسٹیز کہ جو سرٹیفکیٹ کورسز ہیں یہ کبھی بھی اس جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی جو ہے برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ سرٹیفکیٹ کورسز آر اسمالر. وہ ایک ازمپشن لے کر آتے ہیں. اس وقت ایک چیلنج سرٹیفکیٹ کورسز کا وہ ہے جو کہ عارف صاحب بھی اور شاید جو پاکستان میں کریں, کہ اگر آپ 2 مہینے کا, 3 مہینے کا, 6 مہینے کا کورس کر کے جب آپ مارکیٹ میں آتے ہیں نا, تو پھر آپ کا ایک بہت مایوپک ویو ہوتا ہے. آپ کو صرف ایک خاص چیز آتی ہے, آپ کا جو بیسکس ہیں وہ بلڈ نہیں ہوتے.
आपको डेटाबेसेस नहीं आती, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं आते, आपको लॉजिकल थिंकिंग नहीं आती, आपको डिजाइनिंग नहीं आती, आपको क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट किया होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, हमें उस पूरी पिक्चर को देखना होगा। हम इस पिक्चर में से कोई एक पजल का पीस बाहर निकाल के उस पिक्चर को कंप्लीट नहीं कर सकते। हाइब्रिड एजुकेशन इज द नीड ऑफ द टाइम। आपको यूनिवर्सिटीज भी चाहिए, उनको मेजर अपग्रेड भी चाहिए, उनको उनके प्रोफेसर्स को भी अपग्रेड चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन, आई मीन व्हाई टू इन्वेंट द व्हील? अगर दुनिया में कहीं बेहतर कोर्स हो रहा है तो ब्रिंग इट इन। आप अपने स्टूडेंट्स को दिखाइए, अपने स्टूडेंट्स को सिखाइए। चैट जीपीटी, आई डू द ऑनलाइन कोर्सेज फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड अदर। आई from the first thing I do, go on chat gpt, make your login and start with it. So technology, अब ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और ऑब्वियसली वी आर ऑल टेक्नोलॉजी, तो हमें इससे आगे ग्रो करना होगा। और फ्री एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इट्स अ 3% कन्वर्जन रेट। सो 3% से ज्यादा फ्री तो कभी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है? वो आपको सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड इट्स अ वर्ल्ड वाइड चैलेंज। इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान एंड इंडिया और मिडिल ईस्ट। यस, वी आर फार बिहाइंड, ऑब्वियसली इंडिया इज अगेन फार अहेड ऑफ अस। मैं ये समझता हूँ कि माइंडसेट पे काम करना होगा रादर देन इन छोटी छोटी चीजों पे अलग-अलग काम किया जाए, क्योंकि इससे फोकस नहीं डेवलप होगा। Indeed, as you rightly said, we need to look into the bigger picture, and everyone have to play it's their role, including the regulators, educationists, institutions, and the professionals who are sitting in industry who can contribute a lot in terms of bridging that gap of industry and academia. Being that said, now considering the shortage of time, and I really need to shift the paradigm of our discussion towards now, since we have discussed a lot of challenges in the education sector and from an adoption point of view as well. Now let's look at from the future point of view, what is coming, what we should be ready for the next 10 years. Today we have a normal, the adoption of the normal regular LMS based platforms are going on, which is still a bit of a challenge without establishing the clear goals and the direction. Still some of the organizations are doing it really well, but within the very same perimeter, we have big names who are started adopting the new modern technologies to ensure the future delivery or the ways of delivering the educational technology in the future, such as augmented reality, such as using the VR kind of platforms where we can virtually deliver the education. So from an emerging technologies point of view, that in the sector of educational or ed tech, Adnan sir, would you like to share your viewpoint? What sort of trends you could observe around in the globe, and what are more relevant in considering our challenges? One of the things I'm seeing here in general is the AI. The adoption of AI is going really fast pace. So I think from my perspective, or my opinion, is ChatGPT is not bad. How do you use it? It decides. Same as like Twitter or Facebook or anything is not bad. How do you use it? The main utilization. I think it's in our DNA that we pick the bad thing first and then look for the good thing. So if there are something going on, we think that, okay, how can I twist it to find what I need from that? Just to correct, sorry to allow me to, that's not in our DNA, that's in everyone's enthusiast DNA. They want to do the mistakes first before they're getting into the right track, if I believe. Yeah, you're right, absolutely. So ChatGPT as an example I'm giving, what I'm seeing, like there is a big revolution happening in AI in the Western world. Microsoft is pioneer, but Google and all those big guys are also following the same principle and everything. An example is if you're looking for Copilot in Microsoft Office, the minimum license that you need to buy is 300 license. Why they're doing it, and it's around $30 per user per month, is public
unit price which is being offered. And the main reason is within they're offering 300 is they don't want people, one or two licenses will be used and wasting their time. And the companies are buying it. Global companies are quite interested in it. So the co-pilot thing coming up from Microsoft and other organization, which is how can I make my life easier? How can I make life easier of a common person working in the industry? So you're talking about personal assistant in emails. Rather than me reading the 50-page document, can AI summarize that particular information for me? So rather than me spending 2 hours reading a book, it will tell me the gist of that book. It doesn't mean that I shouldn't be reading the book, but it makes your life easier. And I'm seeing that there will be job losses in the future whereby there is a repetitive power type of work. So this is a great opportunity for Pakistan with respect to the number of graduates being graduated. We are producing mass talent. Are we giving them the opportunity to go into the right field? Are we letting them know the opportunities available in the right industry so that they can be a good citizen for the country and also making good value, bringing more value for their own families and for the general society? So I would say, I think definitely we should look into what we can do within AI. There are a lot of courses available and there are ways how we can use it. So there are different applications now coming up. So I think that's one of the main thing that I'm seeing focusing on. The second one, if you allow me, is around the robotics element, automation element is happening. Even in Western world, there are a lot of processes which are quite manual. Especially if you go back to the industry, you see a lot of manual automation process happening. There is a need to automate those processes. And it's happening everywhere, not even in Western world, I would say in Pakistan. So there is an opportunity how we can automate those things. The concept, they call it low code and no code approach, whereby you don't need a hardcore developer writing a C# or C.NET languages or C++ languages to write a piece of code. Is how you can pull number of processes together to get a meaningful results. It's like the complete end-to-end automation. That's a very strong, actually, transformational, I think, the endeavor to explore when it comes to the industrial automation. But let's consider the use cases specific to the educational technology. So, Arif Sab, if as Adnan Sab highlighted, like AI is a very strong player in promoting and enhancing the way we deliver the education. So within AI, we have a lot of areas to look into, such as natural language processing, facial recognition, ML based customized algorithms to assess the IQ levels of the students. How do you think that all that we can leverage in enhancing our way of delivering education today? AI जो है ना वो definitely it's a game changer and AI will change the whole game of education. मैं उससे पहले मुदस्सिर भाई का एक पॉइंट था, उन्होंने सर्टिफिकेशन के हवाले से एक बात कही थी. प्रोफेशनल एजुकेशन, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स, इससे किसी को इनकार नहीं है कि वो एक एसेंशियल है, उसकी रिक्वायरमेंट लाजमी है. नो वन इज डिनाइंग दैट. बट व्हेन वी से कि यार एक एकेडमिया एंड प्रोफेशनल इंडस्ट्री के बीच में देयर इज अ गैप, वो गैप एक सर्टेन लेवल पे जो ना आपकी सर्टिफिकेशन फुलफिल कर देता है. उसकी इंपॉर्टेंस वहां पर है. वो सर्टिफिकेशन होती है, आई एम गोइंग टू हायर दैट पर्सन हु सर्टिफाइड इन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल और ऑरेकल सर्वर. क्यों? उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि उसको पता है कि इंडस्ट्री में किस तरह की चीजें की रिक्वायरमेंट होगी एंड हाउ ही कैन डू इट. तो उसकी एक अपनी जरूरत है. ग्रेजुएशन के बाद इफ समवन इज डूइंग, मैं ये हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, गो फॉर सर्टिफिकेशंस. पढ़ के नहीं छोड़ना, पेपर क्लियर करना है. गेट दैट स्टैम्प ऑन यू दैट यू आर सर्टिफाइड नाउ. तो वो लाजमी है. दूसरी बात, AI, yeah, definitely AI is the future. We all know that. Everything is getting digitalization and everything is getting connected. आप उससे बच नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते. प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि AI की वजह से ना बहुत सारी चीजें जो है ना, बहुत सारे लोगों की जॉब्स और इंडस्ट्रीज खत्म होती जा रही है. एट अ सर्टेन लेवल हम लोग सबको एग्जांपल्स पता है, न्यूज़पेपर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, घड़ी तकरीबन खत्म हो गया, स्मार्ट वॉच वापस आ गई है. थिंग्स आर चेंजिंग. फ्यूचर में व्हाट आई सी, टीचर्स रिप्लेस हो जाएंगे फ्रॉम AI सिस्टम्स.
اے آئی سسٹم اتنا اچھا ہوگا کہ بچے کے سوال کو سمجھ کے اس کو جواب دے رہا ہوگا. ایک انٹریکٹیو اسکرین ہوگی, اس کے اوپر جو ہے کوئی میمی بنی ہوگی یا کوئی پکچر بنی ہوگی, وہ اس سے انٹریکٹ ہو رہا ہوگا. ہماری لرننگ بینگ اے ہیومن بینگ از انٹریکشن. وی نیڈ انٹریکشن. ابھی آن لائن کے اندر ہمارے پاس انٹریکشن نہیں ہے, وی گیٹ بور. تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر یوٹیوب کھول لیا یا کچھ اور کام میں لگ گئے, ہم فوکس نہیں کر پا رہے تھے. اف دا اسکرین از گیٹنگ انٹریکٹڈ ود می, تو میری لرننگ بڑھتی رہے گی, اس کا بہت اچھا ریزلٹ دے گا. ڈیفینیٹلی اے آئی از دا فیوچر, اور اے آئی کے اندر بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں. آر وی ریڈی فار دیٹ؟ نہیں. ہمارے پاس انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر اور دوسری چیزوں کے اوپر وی آر ناٹ پریپیئرڈ. وہ ہماری ایک بڑی اچھی مثال ہے نا, شتر مکھ جو ہے وہ اپنا منہ سر زمین میں دے دیتا ہے. تو یہ ہماری مثال ہے انسٹیٹیوشن لیول پہ. وی آر ناٹ سیئنگ دا فیوچر ایگزیکٹلی کہ ہونے کیا والا ہے. ہم لوگ کیونکہ آئی ٹی پروفیشنلز ہیں, وی ہیو اے ویری بگ بیک گراؤنڈ, اور ہمارے پاس ایک رسپانسبلٹیز ہیں. وی کین نو اینڈ وی کین سی کہ یار کہاں ٹھیک ہے, آگے یہ چینجنگس آنے والی ہیں. آنیسٹلی پاکستان از ناٹ پریپیئر فار دیز تھنگس. اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز کھڑے ہوں گے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کتنے گوسٹ اسکولز ہیں آج بھی, ان کی بھی ضرورت ختم ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. اس کا امپیکٹ کہاں آئے گا؟ گورنمنٹ کے اوپر. اس کی وجہ سے شاید یہ اس اے آئی کو اس طرح پش نہ کر سکیں جس طرح میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اس نے اس کو دیکھنا ہے. ہم جس چیزوں کی بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری کرپشن اور بہت سارے ہرڈلز ختم ہو جائیں گے. تو وہ اس چیز پہ فوکس ہے دوسرے انداز سے. کلامی معاف, میں بس اس طرف تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا, کنسیڈرنگ دا شارٹیج آف ٹائم, کہ یس ایوری مارکیٹ ہیو دیئر اون internal external challenges to adopt any new technologies, اور rolling out کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ صرف technology is not the only thing, it's a mindset and the related supporting processes are there as well. So please allow me to take the discussion to the my last question, because then towards the end of the session I need to collect the takeaways as well. Mudassir sahab, aapka brief viewpoint on this discussion, emerging technologies may, or what more technologies you can think we should, educationists should consider improving the way we deliver education today. ایک کافی لمبا مشکل سوال ہے اس وقت, جس کا مجھے جواب دینے کی کوشش میں کرتا ہوں. ایکچولی آپ نے جو بات کی ہے اور عارف بھائی جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہ ہمیں ٹاپ ڈاؤن اس کو ٹیک اپ کرنا ہوگا. جو اس وقت وی آر ان ففتھ انڈسٹریل ریولوشن, اور جس طرح ہر ریولوشن میں جاب چینجز ہوتی رہی ہیں اور نئی جابس آتی رہی ہیں, اور ہیومنس آر فار بیٹر آف دین دے ور 150 ایئرس اگو. ہم یہ بھی پاس کر جائیں گے کیونکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے دے ول لرن دیز تھنگس, اور وہ اس کے حساب سے گرو ہوگی. مائی کڈس آر کمپلیٹلی ان اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ. ان کا آپ ان سے کوئی اور بات کرتے ہیں تو وہ کہیں اور لے جا کے ملاتے ہیں نا, اوکے 10-12 سال کے بچے کیا بات کر رہے ہیں. تو دین آئی ریئلائز کہ انٹرنیٹ اور ایجوکیشن اور جو ان کے پاس انفارمیشن اویلیبل ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر ہمیں اس پہ گرو کرنا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہم نے آگے کہاں جانا ہے, اور یہ 1-2-4 سال کا پلان نہیں ہو سکتا. It has to be 10-15 years planning, strategic planning, کہ ہمیں اس کو کس طرح گرو کرنی ہے آن لائن ایجوکیشن کو, کیونکہ دس از دا فیوچر. there will be no schools. آپ کے گھر میں ورچوئل ریالٹی ہوگی. اب آپ نے ایپل کے جو ہیڈ سیٹس آئے ہوئے ہیں اور جو دوسرے, اب آپ اس کو لگا کے بیٹھیے اور پھر دین یو آر لرننگ اینڈ دین یو آر ہیونگ اے میٹاورس ان اے کلاس روم ایگزامپلس. تو یہ پوری کی پوری ایک جو ریکوائرمنٹ آف موومنٹ ہے, ریکوائرمنٹ آف انفراسٹرکچر ہے, وہ سب ختم ہوتا چلا جائے گا. اے آئی کتنی جلدی ہمیں ٹیچرس کو اور ایکسپیرئنس کو ریپلیس کرے گا, آئی مے ناٹ ایبل ٹو آنسر دس ناؤ, کیونکہ اسٹل آئی ڈو سی کہ اس کو یہ چیز لرن کرنی ہے. مگر پوائنٹ از کہ the speed that AI is learning all these things, there will be a time when the trainers and the coaches and experience, وہ پھر ایک فوکسڈ ٹریننگ ہوگی. ابھی ہم کلاس روم میں فوکسڈ ٹریننگ نہیں دیتے, ہم آن لائن سیشن میں فوکس ٹریننگ نہیں دیتے. تو اٹ ہیز ٹو بلڈ اپ کمپلیٹ پلان کہ ہمیں آگے کیسے جانا ہے.
गवर्नमेंट को ये डिफाइन करना होगा, फिर जितने छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स और जो लोग अपनी कोशिशें करने होंगे उनको उस डायरेक्शन में लेकर आना होगा. And you just cannot go haphazardly in the future. That part is gone. Our education system is at least 100 years behind European and American, and even European and Americans says that their education system is 100 years behind what the industry needs. So you can imagine where we are standing. So ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है जो कि हम जिसके थ्रू हम एजुकेशन को जो है वो पुश कर सकते हैं, फोकस्ड कर सकते हैं और हर एक तक पहुंचा सकते हैं. इट्स नॉट टेक एजुकेशन, इट्स अबाउट साइंस, इट्स अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, इट्स अबाउट केमिस्ट्री, इट्स अबाउट बायोलॉजी. हर चीज इसके थ्रू ग्रो हो सकती है. As you very like I was gonna pick up that very word of manufacturing. That's it's all about manufacturing your future of your nation, because education, you are building those minds which will basically take your future of the nation to the next level where we can foresee. और आपने एक और point भी बहुत अच्छा touch किया, I would like to highlight as the metaverse. So it's been like a lot of geographies around the globe have already decided to move on to that technology, जहाँ पर AI will be acting as just an added layer where it will solve the language barriers. So people will using the meta technologies, the virtual reality with the augmented reality stuff. They will be using the avatars, joining the meeting rooms or the classrooms virtually from any part of the world, speaking in any language, which will be transformed or translated in a real time to the other end. And education content will be assessed live in a real time based on the inputs of every participant. This seems to be the future classroom, which is geographic, above from the geographic limitation, from the language barriers, and the content and the quality of the way the education is being delivered. So that's been targeted by 2030. And then by 2050, which I believe the world is moving towards the light-free world, which there will not be a need to have the light or tube lights around us, because our retinas will be accompanied by the additional lenses, which will have the IR lens enabled, so we could see in the night as well. So coming back to our last few minutes of the session, I would like to take the final takeaways from each speaker of us. Arif Saab, kindly, if you could briefly share your last few takeaways which audience should take from this session. Arif Saab, are you with us? Yes. आखिरी अल्फाज मैं यही बोलूंगा कि हमने थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, और जो फ्यूचर आ रहा है हमारे बच्चों का, अब जो हमारे बच्चे जो आ रहे हैं, they're going to see a totally different world than what we have seen or what we are living in. और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी लाइट फ्री जैसा आपने कहा, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. तो डेफिनेटली इट विल हैपन. सिर्फ अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है ना इस चीज को समझने की ताकत अता फरमाए, और हम वो काम करें जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो. थैंक यू. Mudassir Saab, final takeaways, please. इम्पोर्टेंटली बहुत आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज CxO ग्लोबल ने टेकअप किया. ये फ्यूचर है, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर बनाने की बात कर रहे हैं. हम एजुकेशन आम करने की बात करें, हम एकेडमिया और इंडस्ट्री गैप को कम करने की बात करें. Online education is the solution for it. Online education can support in a big way to the lack of infrastructure that we have, lack of universities that we have, lack of schoolings that we have, lack of teachers that we have. That could go a long way. बहुत अच्छे लोग हैं आरिफ साहब जैसे जो कि पढ़ाने को तैयार हैं, फ्री में भी अवेलेबिलिटी है, but it's again a mindset that we have to work on. And thank you for the opportunity.
Thank you. Thank you very much, sir. Adnan Sahab, your final takeaway, please. Yeah, two quick things I'll say. One is there's no shortcut to success, so you have to work hard. Make sure you're working hard. I think if I narrate it differently, work smart than work hard to make sure that AI is all about working smart. It's not like someone else will do your job. You're just doing it smartly. The second thing, I think there is a will just to make sure we combine the effort. So I've seen recently the examination system is being changed in intermediate globally within Pakistan, whereby there's a new GPA system coming up starting from 23, then 24 it will be then announced, which is going to be quite similar to what's happening in the Western world. But when I read that story, I was really surprised how they agreed with intermediate boards across the whole country. But it happens, and now they are going to go with this new marking system. So at least if there is a way, there is a there is a will, there is a way. So I think there was a will, so they were able to achieve it, and it was quite complex thing. So in the education, the same thing. If CxO Global is doing the same thing, bring the academia, bring the industry, and making sure that we can go back to academia and let them know what is the need of the industry, rather than trying to produce talent that no one is interested in to adopt. Right. Thank you. Thank you very much, Adnan Sahab. So with this admin, I need we have to conclude this session. So I would like to thank each and every one of the from the audience as well who have attended the session. I would like to thank our speakers, panelists who have shared their experiences and viewpoints, and I very much looking forward to engage with a similar kind of caliber of panel in the next future sessions as well. With that said, have a nice day ahead. Assalamu alaikum.